class, we have seen that how to actually implement the internal DTD, and as well as we have tried to integrate both the things. First one is internal DTD, and the second one is external DTD. Okay, so what is the difference between the internal DTD and how it is different from the external DTD? All these things practically we have seen and understood. Only difference is if you are putting this external DTD into a separate file, then it becomes external DTD. If it is not so, if you are keeping the same thing here at this place, then it becomes the internal DTD. So that part we have covered, and by this time, everybody must have understood the importance of the DTD as well as how to use this, and what is the purpose of using this DTD in XML files. Okay, because if I start with theoretical explanation, maybe you are all not that much equipped with what is the role of the DTD in the first place. So still, if you are in doubt, at least partially, it will get rectified as we move on to the other topics. So if there is an XML, the validation is optional. If you want to comply to some rules, you have to create the DTD. So the DTD are nothing but the rules. So it can be a schema like for the database. So if you just design the schema accordingly, you have to pump in the data into the database. So that's what the DTD is also doing here. Okay. So the role of the DTD is nothing but to validate whether as per the declarations, so these are the declarations, as per the declarations, this XML is following the rules or not. So this is what actually it is doing. Okay. So now this is not the entire DTD because we are still very at the initial stage of understanding the DTD. So that's why we want to have some good understanding of how to write an XML DTD in the first place. तो अभी तक आपको मैंने एग्जांपल इसीलिए बताया कि सो दैट आपको समझ में आ जाए कि DTD का यूज क्या है, DTD को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. ठीक है. सो स्टिल लॉट ऑफ रूल्स आर देयर. एट्रीब्यूट्स के लिए अलग है, नोटेशंस के लिए अलग है, एलिमेंट्स के लिए भी डिफरेंट टाइप्स का इम्प्लीमेंटेशन है. सो इसको पहले थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करना जरूरी है, देन वी गो टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. क्योंकि प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगा. सो पहले we will try to cover up with the theoretical aspect, then we will move on to the practical implementation. Okay, so let us understand DTD's introduction. So introduction के बारे में आपको अभी दोबारा explain करने की जो इतना जरूरत नहीं है, whereas some additional importance we try to understand. So using a DTD to create a valid XML offers several advantages over just using a well-formed XML. Now you both you know the difference between these both well-formed and this valid. Okay, so valid XML is different from the well-formed XML. XML अगर आप बना रहे तो it is by default a well-formed XML, लेकिन उसके ऊपर आपको रूल्स अप्लाई करना है तो then you have to write the DTD, then only it will become a valid XML. So these are the differences actually. But an XML cannot be validated without the well-formed XML. So पहला step well-formed है, then only valid आता है. So with valid XML and DTDs, what we can do is we can specify the types of child elements and content that an element instance in your document must have. मतलब suppose एक root element है, वो root element के अंदर child elements कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर का कंटेंट, चाइल्ड एलिमेंट्स का कंटेंट कैसा है और उसका इंस्टेंस किस हिसाब से दिया गया है, ये सारे के सारे चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन ऑर्डर एंड नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट्स में अकर, दिस वी हैव नॉट एट ऑल डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस एग्जांपल्स. सपोज मान लो एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉइज है, एक ही एम्प्लॉय नहीं रहता है, मल्टीपल एम्प्लॉइज है. with this kind of implementation, suppose यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय का नाम लेता हूँ, नेम सम XYZ, ओके, बट दूसरे एक और एम्प्लॉय भी है, उसका भी नाम आएगा, बट इट विल बी इनवैलिड.
So why it will become invalid? Because how many times it should be appearing. An element can be repeated validly for how many times? This we have to convey to the parser. So कितने बार आ सकते हैं और उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? ऑर्डर तो एटलीस्ट हमने देख लिया है. देखो ये shift, then year, then sem. So this is the order: shift, year, and sem. Okay. So for example, I will write sem before the year. Sem मैं यहाँ पे लिखता हूँ, and I will go back to the XML. Now I will try to validate. सेव नहीं किया मैंने, सेव करके मैं करता हूँ. सेव करके दोबारा एक बार चेक करता हूँ. It says that element year is not allowed for content model shift sem year. So ये error कुछ तो भी दे रहा है, that but we have to understand that there is some order erroneous implementation of the order for this MCA element. तो जब तक ये उसको सुधारेंगे नहीं, shift year sem, और आप जब तक इसको सुधारेंगे नहीं, ओके, क्या था शिफ्ट सेम है ना, शिफ्ट के बाद सेम है. अभी मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद वैलिडेट करता हूं, देन इट बिकम्स वैलिड. ओके. एंड वन मोर थिंग, नेवर ट्राई टू वैलिडेट द DTD. बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स में ये करते हैं, इसको पकड़ के वैलिडेट नहीं करना है. ये देखो ये DTD है, DTD इज देयर टू वैलिडेट एन XML. ओके. और उसका हमने यहाँ पे लिंकअप दिया है. So whether an XML is valid or not, you have to check by clicking from the XML file. ये देखो ये XML फाइल है, XML फाइल को मैं क्लिक करता हूँ, then only this message will appear. And this second one is a DTD file, and if you are clicking from this DTD file, it will give an error. So some blah blah error it will give, expected comment or see data section, something you will never understand, because you are actually wrongly validating this DTD, because DTD is there to validate the XML, but you cannot validate the DTD. We are going to specify the order and the number of times the elements may occur within a document. Then specify the attributes for elements and force those attributes to be required. Attributes को भी define करना पड़ेगा अपने को. So attributes अपने example में कहीं पर भी हमने attributes को लिया नहीं. Okay. So how an attribute is written? This we have seen an example. Okay. So this is my attribute. Or some number is equal to 4. ये ऐसा आप attributes कहीं पर भी within the element declaration you have to provide. But अपने example में हमने अभी तक attributes को declare ही नहीं किया, because it will get complicated. तो आपको नहीं समझ में आएगा. So that's why I have not taken that example. But धीरे धीरे जाएंगे gradually. पहले elements को completely understand करेंगे, then we move on to the attributes. So DTDs के लिए specify the proper attribute names, along with that whether they are mandatory or they can be optional. ये हम स्पेसिफाई करेंगे. मतलब एट्रीब्यूट अगर है इसके अंदर, वो मैंडेटरली अवेलेबल होना चाहिए या ऑप्शनल होना चाहिए. ये दोनों हम DTD के रूल्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं. नॉट ओनली द ऑर्डर एंड रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट नेम्स, as well as attribute enforcement is also we can apply in the XML DTD. Then specify the default value for the content of an attribute. मान लो मुझे एक attribute लेना है, suppose ID, and मैं अगर इसको specify नहीं भी करूंगा, so it should be read out by the parser like 01. ऐसा भी मैं attributes को define कर सकता हूँ from the DTD. Okay. How? We will see practically later on. So specify the default value for the content of an attribute. Limit attribute values to a predefined list of choices. That means list of choices means suppose shift number is equal to either one or it can be two. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 4 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है, then 200 भी आ रहा है. So these are not at all possible, because there are only two shifts. They can be either one or the number can be 2.
So that is what we want to apply from the DTD as part of the rule to a given attribute. So attribute के लिए यही हम defined predefined values के साथ ही हम validate करना चाहते हैं. So limit attribute values to a predefined list of choices. This also we can implement. Then create entities or shorthands. These are nothing but the variables in the parallel programmatic language. You can understand entities like a variable that can be used to represent special characters or strings within your XML document. Okay, so all these are we can enforce from the DTD file or from the internal DTD declaration, so that to validate an XML. ये सारे के सारे रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं. हमने अभी तक जो एग्जाम्पल देखा ना, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखा हमने, ठीक है. ये भी इसीलिए देखा सो दैट एटलीस्ट यू शुड बी हैविंग एन आइडिया ये डीटीडी होता क्या है, उसको लेके हम करते क्या है. सो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, बट दैट्स नॉट द डीटीडी. जब तक हम ये पूरा का पूरा ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, दिस विल नॉट बी कंप्लीटेड फॉर द एंटायर टॉपिक ऑफ द डीटीडी. तो ये सारे के सारे हम बाद में चेक करेंगे. तो XML डिक्लेरेशन हम कर सकते हैं फॉर द चाइल्ड एलिमेंट्स, उसका ऑर्डरिंग नंबरिंग के लिए कर सकते हैं, एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन के लिए कर सकते हैं, मैंडेटरी और ऑप्शनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रोवाइड सम लिमिटेड वैल्यूज, एंड नॉट ओनली दैट वी कैन क्रिएट द एंटिटीज. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू अंडर द डीटीडी डिक्लेरेशन. Then, so DTDs are a type of schema. If you have completed the DBMS, you should be understanding the name of the schema, the constraints. All these should be clear to you by this time. So, in the generic sense, the word schema is a set of information that describes the structure of another set of information. So, जब आप schema means example के लिए आप डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किए होंगे, तो अभी प्रैक्टिकली आपने ट्राई आउट किए होंगे, तो क्रिएट टेबल. ओके, सो टेबल नेम हियर, सो द टेबल नेम कैन बी एम्प्लॉई, देन कम्स विथ द डिक्लेरेशन फॉर द columns. So this is what? This is nothing but we are creating a schema for a particular table. The name of the table is employee and it is having some columns, integer, then string, then boolean. So all these are becoming the information about that particular column data. Okay, so similarly the schema is a set of information that describes the structure of another set. So this is the structure that is having some information in the rows and columns format. Okay, so but basically what we are going to do is, first of all you have to define a schema. जब तक आप स्कीमा डिफाइन नहीं करेंगे तो वो आप टेबल के अंदर एनफोर्समेंट नहीं कर सकते हैं. इंटीजर शुड बी द स्टूडेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी शुड बी इंटीजर. ये एनफोर्समेंट कहाँ से करेंगे आप? ये एनफोर्समेंट यहाँ से करेंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट द स्कीमा इज कॉल्ड. सो you could think of a schema as a set of rules or a grammar for describing some kind of structured data. Schemas are not just used in XML. Databases have also schemas which describes how data is stored in the database and how the various data relate to another. ये just अभी मैंने जो example दिया same. So schemas are there whenever we are talking about data. So whenever we are talking about some data in a to properly store in a particular format in RDBMS or in flat files, if you are saving some data, then it becomes mandatory to comply with some rules. The rules are nothing but the schemas. So XML do have the schemas. Okay, so DTDs are a type of schema. So DTDs are nothing but a schema to an XML for describing the data structure of an XML document. The first thing that you will notice about the DTD is that they use a completely different syntax from the XML. Different कैसा है? DTDs do not contain start tags and end tags. यहाँ पे मैं अगर DTD को ओपन करता हूँ, this is the start.
स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग कैसा रहता है? दिस इज स्टार्ट and here it becomes the end. Okay, but DTD do not have the starting and ending type of format. इसका कुछ सेपरेट ही फॉर्मेटिंग है. लेस देन एक्सक्लेमेशन से स्टार्ट होता है and that entire declaration is being ended with the greater than symbol. Okay, so it is not similar to the element declaration. जो आप एलिमेंट के लिए डिक्लेयर करते हैं वैसा नहीं है ये. So per se, DTD have their own syntax and DTDs are not well-formed XML. हाँ, ये अगर मैं अभी इसको क्या करूँगा, ये क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट बटन किसके लिए, वेल फॉर्मनेस के लिए. ठीक है. सो continuing with the previous reminder on do not click on this validation button on this DTD, external DTD, क्योंकि वो काम करने वाला नहीं है. Similarly, do not click on this well formedness because well formedness कंप्लाई करने के लिए इसमें कोई स्टार्टिंग टैग भी नहीं है, एंड टैग नहीं है. And one of the well formed rules is for every corresponding start tag we should be having an end tag. हर एक स्टार्टिंग टैग के लिए करस्पॉन्डिंग एंडिंग टैग भी देना जरूरी है. बट डीटीडी के सिंटैक्स ही ऐसा है कि इसमें ना कोई स्टार्टिंग टैग है ना कोई एंडिंग टैग है. सो दैट्स व्हाई जस्ट डोंट क्लिक ऑन दिस एदर वेल फॉर्म्ड बटन और द वैलिडेशन बटन. दोनों काम करने वाले नहीं है. क्लियर? सो डीटीडीज आर नॉट वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट एट ऑल एक्सएमएल, क्योंकि वेल फॉर्म्ड नहीं है तो एक्सएमएल नहीं है. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वेल फॉर्म्ड नहीं है then we cannot say that document as an XML. As simple as that. So that's why DTDs are not XML. A is equal to B, B is equal to C. That's why A is equal to C. So in that way, DTDs do not well form. So DTDs are not XML. So this is a critical difference between the DTDs and the XML schemas. Okay. Moving to the next one, DTD structures. There are basically 4 physical constructs that can be used to in a DTD to create the rules. What are they? They are basically DTD structures को define करने के लिए क्या-क्या अपने पास components हैं. Okay. So what are they? They are element declarations. DTD को use करते हुए हम elements को declare कर सकते हैं. Attribute declarations. Yes, we can define the attributes also. Notation declarations, entity declarations, parameter entity declarations, and comments. And with this, we complete the 100% of the DTD implementation. अगर आपको ये 6 के 6 आ जाता है तो आपको DTD 100% आ गया करके आप मान सकते हैं. ठीक है. So those components are element declarations. We can define the elements, we can define the attributes, we can define the notations, entity declarations, parameter entity declarations, and comments. What they are, one by one we are going to discuss. So सबसे पहले सबसे important structure क्या है XML के लिए? Elements, because elements only give the structure to the document, to the XML document. Okay, without the elements you cannot provide the structure like this. So this is the structure. Okay, so ये root element है, इसके अंदर departments का सब element. So this is the basic structure, so that we are clearly identifying. So this is a part of this department, and this is a part of the parent departments, and departments is a part of the RCM. So in that way we have a clear cut idea of the information alignment. हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अलाइन करके हम बता रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं विद द डेटा ऑल्सो. ओके, सो ब्लू कलर में आपको जो दिख रहा है वो क्या है? इट इज स्ट्रक्चर. जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है. जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो डेटा है. एंड जो रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है? एट्रीब्यूट्स है. एंड जो ब्लैक कलर में दिख रहा है एट्रीब्यूट का वैल्यूज है. क्लियरली यू कैन सी वेरी क्लियरली अपॉन viewing any XML document. So first we will try to understand how to declare a basic elements. आपको पता है वैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, ये एलिमेंट्स ही हमने डिक्लेयर किया है, बट स्टिल व्हाट आर द रूल्स दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड.
ये हमने एग्जाम्पल जो कल किए थे ना लास्ट क्लास में, ये एलिमेंट को ही डिक्लेयर किया, बट इट इज हैविंग सम एडिशनल contents also, so that we will discuss in brief. Element declarations. Elements are primary building blocks of XML. They have the general syntax as follows. So the syntax is, whenever you are declaring an element, it should be started with the less than symbol, then comes with exclamation, then caps. Caps में ही देना है element, small में नहीं दे सकते हैं. Then comes with the element name. This can be anything. Element name आप कोई भी दे सकते हैं, and accordingly within the brackets it can have some content. So this is the general syntax. ठीक है. So general syntax मतलब कभी भी आप element को declare करेंगे तो ऐसे ही declare करेंगे. Element keyword, then name of the element, then what is the content in that element. So let us understand with some examples. So elements are classified into three different types. First one is standalone. Second one is simple elements. Third one is compound elements. And what is the difference between these three? First of all, standalone is for the elements which are looking like this, because they do not have the end tag. So this is the starting tag as well as the ending tag. And in the very first class I have said that this is called as self-closing tag also. Self-containing tag, self-closing tag, empty tag, standalone tag. Name can be anything because different books says different names. But generally an empty tag or a standalone tag or self-containing tag is nothing but the element that you are going to create in this way. So in HTML, BR for the break, HR for the horizontal line, image, all these are nothing but the self-closing tags or standalone tags. So उसको अगर आपके XML में ऐसा कोई एलिमेंट आता है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे. You have to write with the element name, then comes with the name of the element. BR is the name of the element. Getting? Okay, so BR is the name of the element, and this element do not containing anything. It's a empty tag, so that's why you have to write this keyword empty in caps. Similarly, अगर आप HR के लिए लिख रहे होंगे तो an element is there with this HR name and which is a standalone, so that's why I have to write empty. So in that way you can create the standalone elements in the DTD. And one thing is, the same element declaration standalone में ही दूसरा एक type है unrestricted. Unrestricted means element, some element name, and it can contain the keyword any. Any means either it can contain the text or it can contain the element. So suppose for example यहाँ पे MCA है, MCA के अंदर हमने क्या बोला है कि MCA के अंदर shift sem year ही आना चाहिए इसके हिसाब से. Okay, MCA shift sem year. But if I am writing here like some text, then coming with this, then coming again with some text, ऐसा अगर आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है, देन ये वाला नहीं चलेगा. यहाँ पे आपको एनी लिखना पड़ेगा. क्लियर? ओके, अंडरस्टूड? Any is for anything. Any is for anything. It can be happy even if it is finding some finding some text, or else if it is finding some elements also it is fine. So that means, so content can be either text or the content can contain inner elements. So both are valid. So in those conditions, you have to take this any. So this is one kind of declaration. Next, simple element. ये देखो, एक ये भी एलिमेंट ही है, ये भी एलिमेंट है. ये एलिमेंट के अंदर कंटेंट नहीं है, मींस डेटा नहीं है. ये एलिमेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है. ऐसा उन्होंने दो डिफरेंशिएट किया. इस द एग्जांपल.
Simple. So simple element means there is an element with the name greeting, and it is having some PC data. So how to create this kind of XML? You have to uh, name the element, then you can keep some PC data. So this is otherwise hi, hello, everyone. So this is some PC data, and the name of the element is greeting. So that's why we have declared that there is an element with the name greeting, and it can contain the PC data. So that's why it is a valid XML. इसके हिसाब से ये valid XML बनता है. Vice versa, for this XML, this is the corresponding DTD. So whenever you are coming across this kind of implementation, this is called as simple elements. Then compound elements, इसमें additional एक और भी दिया, PC data is the only available text type. Whenever we are talking about the simple data, that means simple element, that means we are talking about the PC data. ये example में this is the simple element, this is simple element, and this is simple element, but whereas this is a compound element. Getting? So this is a compound element because we do not have the PC data, but all these are simple elements because these are having the text in its element content. Element content के अंदर text आ रहा है, so that's why PC data करके हमने उसको define किया है. So compound element को declare कैसे करेंगे? Element with whatever is the name of the element. Here employee is the name of the element, and it can contain some inner elements. So inner element क्या लिया मैंने? Name लिया यहाँ पे. ये example आप check कर सकते हैं. I will highlight the example with red color. Okay. So this example is for this DTD. ये DTD है. ये अपना XML है. So the element is containing one more inner element with the name. ये केस के साथ मैच होना चाहिए. मैं ऐसा नहीं ले सकता हूं. It is wrong. Okay. So it is containing the name. Then we have to convey to the parser what is name actually. The name is nothing but another element, another simple element, which is containing PC data. Got it? First of all, we are concentrating on the DTD declaration for the element types only. Okay. So element declarations, again, they have been divided into three sections. First one is we are talking about the standalone element. Standalone elements में content नहीं रहता, so that's why this keyword becomes important. And another one is unrestricted, which can contain anything. So that's why we are keeping this keyword any. So only standalone and unrestricted elements will be coming across these keywords. Otherwise, इसके अंदर PC data कभी नहीं आएगा. That is the difference. Okay, इसके अंदर PC data कभी नहीं आएगा. But whereas the second one is थोड़ा formatting गड़बड़ हो गई. ये second one है. The second one is simple element. Simple element anytime is containing the PC data. Whenever we are seeing the data in this way, which is having the content. So this is the XML. So I will highlight that in red. For this DTD, this is the XML. So whenever we are writing this as the element content, that should be a PC data. And the name of the element is greeting. So this is second one. Third one is compound element, which is containing some inner elements. And then again, you have to elaborate the inner elements with the simple types. So that's what we have done here. यहाँ पे RCM है, RCM के अंदर departments है. So this is a compound element. देखा? RCM के अंदर departments है. Departments के अंदर directly content नहीं है. Content means element content ऐसा black color में नहीं आ रहा. It is containing another inner elements. So that's why whenever we are elaborating what is this departments, there is an element with the name departments. It is containing MCA. So go to the departments. It can see the MCA. Yes, there is an element. Then parser reads the MCA element declaration. There is an element MCA which is containing inner elements. तीनों एक ही के अंदर आ रहा है.
तीनों एलिमेंट्स एनसीए के अंदर आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर इन दिस वे एंड इन दिस ऑर्डर ओनली, शिफ्ट सेम ईयर. सो व्हेन आई ओपन दिस एनसीए, तीनों इसी के अंदर आ रहे हैं, शिफ्ट सेम ईयर, and then again it is also a compound element. So these three are compound elements, these three are simple elements. Clear? Yeah. So not only the element declarations, elements को हमने अभी तक declare किए हैं, but again one additional significant importance of having this, what is this, specify the order. ये अभी तक हमने क्या declare किया था, ये वाले part के लिए हमने discuss किया. Specify the types of chain elements, whether it is a simple element, compound element, or that is an empty element, standalone element. So in that way we have discussed. Second one is specify the order and number of times elements may occur within a document. For that we have this particular table. See carefully. You can. So significance of the occurrence indicators. Occurrence indicators means, suppose I am writing the element in this way. That means we do not have any symbols like star. So these are the symbols plus question mark. Okay. So if they do not have any symbols, that means no symbols are there in that element content. The occurrence is exactly once. Only one time they can occur. Only one time they can occur. Okay. Because I am not putting any symbol in this. But what if you want to have multiple times of repetition of this contact element? Suppose the occurrence can be 0 times or more times. Means कंपनी के अंदर कांटेक्ट करके एलिमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ऐसा अगर आपका कंडीशन है 0 और मोर, 0 और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, क्लैरिटी के लिए मैं लिख रहा हूं. Whenever it is 0 or more means anything, 1, 10, 100, 1000, then you have to keep the symbol star. Then 1 or more, 1 or greater than 1. Suppose you have an element, with the name book. A book is there only if it is written by someone. Okay, अगर author है तो book है, बिना author का कोई book नहीं रहता. That means वो अगर 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं. एक एक चैप्टर एक एक लिखा होगा, सो 10-15 भी हो सकते हैं. That means whenever there is a book, it should be having this inner element. अगर ऐसा आपको डिक्लेयर करना है, you have to keep this symbol plus. Clear? Very simple in understanding. Okay, so this is here and this is here like this. And third example is an employee is there, but that employee can be having a PAN number or he might not be having that PAN number because उसने अप्लाई नहीं किया होगा, उसको PAN नहीं मिला. So it becomes an optional one. So whenever you are having this kind of element declaration, 0 or 1, 0 और 1 occurrences है, so question mark आता है. Exactly one time, no symbol. 0 or more times, star. 1 or more times, plus. 0 or 1 time, question mark. 0 or 1 means either if it is there or not there. If it is there, it cannot be greater than 1. It should be equal to 1. Okay, it should be equal to 1 or it can be 0 also. Both are valid. Then only you have to take this question mark. इसको मैं थोड़ा सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं. सपोज छोटा सा एग्जांपल है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा. नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस सिंबल इंप्लीमेंटेशंस. जैसे क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, एस्टेरिस्क सिंबल कहाँ पे यूज करना है, प्लस सिंबल कहाँ पे आता है, अगर नो सिंबल है तो क्या है. एग्जैक्टली दिस इज इक्वल टू 1. ओके, ये है 1 टाइम. एग्जैक्टली 1, नॉट लेस देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1.
So exactly one time है तो ये ऐसा without symbol आता है. So here we have taken this LCA. देखो यहाँ पे ईयर के बाद कुछ भी सिंबल नहीं है, ठीक है. सी केयरफुली हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस अकरेंस इंडिकेटर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है. सी केयरफुली. ईयर के बाद मैंने कुछ भी सिंबल नहीं लिया है. दैट मीन्स दिस इज ओनली वन टाइम अकरेंस. आई एम गोइंग बैक टू हियर and I am clicking on this validation. Now XML is valid. See what happens next. सेव कर रहा हूं मैं. सेव करने के बाद वैलिडेट किया मैंने. Element here is not allowed for content model so and so. So it is exactly not getting the proper validation. So it is complaining something. ये अभी इतना पार्सर इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि एग्जैक्टली तूने दो बार ले लिया, ऐसा कंप्लेन नहीं करेगा. बट देयर इज समथिंग मिसिंग एट दिस 13 मतलब इसके पहले कुछ तो भी एरर हुआ है. सो ईयर इज डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वंस, बट वी हैव क्रिएटेड 2 एलिमेंट्स हियर. सो उसको वैलिडेट करना है तो या तो आपको ये निकालना पड़ेगा. अगर आपको मल्टीपल टाइम्स रखना है तो क्या करेंगे. सो यू कैन टेक, सो दिस इज मोर देन वन है ना. सो यू कैन टेक सेफली स्टार भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है. सो सपोज व्हाट हैपेंस, मैंने प्लस ले लिया यहाँ पे. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस. नाउ इट बिकम्स वैलिड. स्टार के लिए भी वैलिड है क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 1 है. सो दोनों ग्रेटर देन 1 है तो ये देखो मैंने अभी 7 टाइम्स 10 टाइम्स ले लिया, स्टिल इट इज वैलिड बिकॉज वी हैव रिटन प्लस. even though you can write the star also, both are valid because जीरो नहीं होना चाहिए. स्टार मीन जीरो और मोर है तो ये एप्लीकेबल है. जैसे मैंने यहाँ पे स्टार कर दिया, स्टार मतलब क्या होता है कि जीरो और मोर. ओके, सो सी द डिफरेंस. आई एम कंप्लीटली एलिमिनेटिंग दिस हियर. completely I have eliminated this here. Clicking on this, still it is valid. So see the power of the occurrence indicators. So ये ऐसा define करना पड़ेगा. So this is the important implementation of the occurrence indicators. पहले क्या था, मैं अगर अभी ये symbol नहीं देता, so when I am clicking on this validation, it will complain that year कहाँ पे लिखा है तुमने करके. So जब तक मैं year नहीं लिखूंगा, so it will not validating my XML. But in certain conditions, you may not be having the data for that particular year. So you don't want to keep some random data. जैसे मैं year, मुझे पता ही नहीं है कि कौन से ईयर का डेटा है, ठीक है. सो मैं 2021 के लिए लिख रहा हूँ, बट मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि 2021 के लिए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली skip this element, and what I will do is I will put a star or a plus symbol, and whenever I am checking on this, it is giving back me the valid XML.